who is going to share about the most topic for today, which is measles in kids. We are understanding the causes and treatment. Before we begin, I would like to tell you all that Baby Chakra is a one-stop destination for all the moms who are expecting, who are new moms, and also who for parents who are looking for solutions. We bring to you the best doctors for these live sessions who give us research-based knowledge, share their experiences, and also give us valuable views on the topic. Without further ado, I would like to welcome Dr. Amrinder. How are you doing today, doctor? All good. Thanks a lot, Pooja. How are you doing? I'm all I'm doing fine. wonderful, doctor. Doctor, could you please tell our audience about yourself? Yeah. So I'm Dr. Amarinder Oberoi. I'm born and brought up in Bombay. I am a pediatrician basically working in Bombay as well. I run a Instagram page called kiddo.amrinder where I love to share small reels and bits of information regarding upbringing your babies and nutritional tips and some lactational tips as well. Wow. So, a doctor with such a beautiful background, is joining us, and we are privileged to have you here, doctor. So, before we begin, I would just like to tell our users that measles outbreak is happening across the country, and we wanted to have a few, thought questions from the moms to be answered out over here. Thank you for taking out time, Dr. Amrinder. Before You're we welcome. begin, would like to ask you, what is measles basically, and how do we identify the signs and symptoms of this disease in kids? Yeah. So measles is something which is not very uncommon. Right now, with the vaccination and everything coming into picture, measles has been controlled. But traditionally, measles was a pretty common disease. Okay. Okay. A patient who comes to you with fever and a rash on the body was traditionally labeled as measles once upon a time. Right now, if a patient in the OPD comes to you has fever, which is high grade typically, and then there are multiple rashes on the body. These rashes start around the head, basically wherever your forehead, the hairs start, and then they progress down. These are flat red rashes, and they progress rapidly. These are like the initial signs and symptoms of measles. Going further, the child will be very much dehydrated. The child will be lying on the bed, tired all the time. The eyes will be like blood red. And along with that, there might be dehydration. And if your chest is like your respiratory system is involved, there might be signs of increased breathing present. Like, so when it happens in kids, should we say that is it a contagious disease, or is it like Yes. So, yeah. So, how as do I these said, kids can get it? so measles is basically by a family of virus called morbilliform viruses. The name is not Okay. at all important for the audience. It's more of a scientific term. But yes, the virus is very, very contagious. Medically, we label it as a secondary attack rate. It's 90% in measles. Now, how do I tell it in general terms? You're sitting in a room where 10 people are unvaccinated against measles, meaning they have not received any of the vaccines against measles. So, 9 kids will definitely will get measles. That is the contagious intensity of the disease. Okay. So, how long do these measles stay for on the kid's body? As you said, the child might show symptoms of dehydration, might be lying down, and may not be having that energy. So, how long, what would be the duration of these diseases? So, can you please? Yeah, so the thing is, these symptoms generally have a prodromal time. Like there are many stages of measles, like 4 stages basically. So in the starting phase, which is the prodromal phase, we label it, the child generally has a low grade fever. He might be having intermittent cough. Redness might be very mild initially, but like around the 4th to 5th day of the illness, the child will develop this rash. And just a day prior to your rash coming in the picture, the child will have high grade fever signs. This remains for the next 7 to 8 days, and then the rash fades off. But when the rash fades off, it gives you blackish spots on the body. That is Oh, like pathognomonic of measles. Yeah. okay. So you can overall count that it takes around 12 to 14 days completely. उसके पहले बच्चा ठीक नहीं होगा. 12 से 14 दिन तो पूरे लगेंगे ही लगेंगे बच्चे को ठीक होते. बट उससे मुझे और एक सवाल पैदा होता है कि इचिंग होती है,
रैशेज आ जाती है, रेडनेस आ जाता है, ओके, दैट इज ऑल हम लोग समझ सकते हैं। बट अगर बच्चे को ऑलरेडी एमएमआर का वैक्सीन दिया है तो उसके बावजूद भी किड्स को ये आता है, मीजल्स आते हैं यस, दिस इज यहाँ। द कॉमनेस्ट थिंग, ये आजकल एवरी पेरेंट इज आस्किंग मी। सो हमने हमारे बच्चे को दिया हुआ है। इनफैक्ट माय ओन सिस्टर शी डिलीवर्ड अ बेबी 6 months बैक, तो उसका भी ऐसे ही, माय बेबी इज ऑल फाइन, लाइक उसको नहीं होगा। सो हाँ, हियर द कंफ्यूजन विद पेरेंट्स इज कि अगर इंजेक्शन दिया तो चाइल्ड विल बी फाइन और नॉट। सो आई जस्ट फर्स्ट स्ट्रेस ऑन द वैक्सीन्स व्हिच आर गिवन फॉर मीजल्स। So the first vaccine जो हम देते हैं that is at 9 months of age. उसके बाद राइट, the second vaccine is at 15 months of age. These are the two mandatory doses. Now there करेक्ट, is another dose at 4.5 years of life. Okay, जब बच्चा 4.5 साल का होता है, which is recommended by the Indian Association of Pediatrics. Not a very compulsory dose, but yes, definitely recommended. अगर दो doses मिले हुए हैं, the child is protected. ओके, अगर दो doses नहीं मिले हैं, then there is a high chance your child will get it. So the first dose at 9 months and the second dose at 15 months. चाहिए ही चाहिए. You don't have an option. वो करना ही पड़ेगा राइट। आपको. और इससे And मुझे here, सॉरी yeah, सॉरी, sorry, yeah, you can continue. Yeah. नो, इससे मुझे और एक क्वेश्चन याद आता है। एज अ मदर आई एम आस्किंग यू आउट ऑफ द एक्सपीरियंस कि मीजल्स और चिकन पॉक्स के दोनों में डिफरेंस हम लोग घर पे कैसे जान पाए? मतलब हम लोग डॉक्टर के पास डेफिनेटली ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, बट दोनों में, क्योंकि यहाँ पे It's a very जो nice लत, question actually. ये Yeah, मीजल्स it's a की very लत nice जो question है, actually. या measles है या chicken pox है, considering करेक्ट, chicken pox is way more common and हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि chicken pox हुआ तो करेक्ट, लाइफ टाइम में कभी नहीं होगा, तो एक बार तो हो ही जाए. That is what our parents traditionally have यस, thought is. यस, Yeah. So chicken pox का कैसा होगा? जो rash, that is the differentiating feature. जो measles का rash होगा, that will be like, if you see on the skin, it will be a flat rash basically. ओके, Measles का जो rash होगा, it will have secretions inside it. ओके, So basically, if you kind of puncture it or even if you scratch it, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लग जाएगा. And high chance it might get infected as well. Measles के rash में ऐसा नहीं है. It will be red, लाल, एकदम flat होगा on the surface of the skin. That is how ओके, you can differentiate it. And measles में one more thing. Cough will be very predominant. In fact, I'll take you to another point over here. I'm interrupting you. नो वरीज, कि मीजल्स फैलता ही कॉफिंग से है. या तो आप कॉफ अच्छा, करोगे तो मीजल्स किसी बच्चे को अगर है उससे फैल जाएगा, या आई सेक्रीशंस एज आई सेड, आईज आर ब्लड रेड, तो उनसे फैल जाएगा. किसी ने टच किया है, या फॉर दैट मैटर इफ किसी ने किस भी किया है एक दूसरे को, then ओके, too measles can spread. So basically it's a droplet infection. इट्स अ And it's not ड्रॉपलेट, necessary, yeah, and not necessarily कि अगर बच्चा रूम में है तभी होगा. हम्म, Measles ओके, virus can stay in the air for at least an hour after the infected person has gone from there. Okay, that brings me to an audience question which a mother has asked कि is vaccination really very important? क्या होता है कभी कभार mothers don't get the near they don't get to the primary health care center और वहाँ पे जाके उनका vaccination नहीं होता है, probably schedule नहीं follow किया जाता है 2 tier cities या 3 tier cities में. So यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि अगर ये उनको बेबी को डिजीज होता है और उन्होंने अगर वैक्सीन नहीं लिया है, सो व्हाट, in what way can they protect the kid? So the thing is, पहली चीज तो, if you think there is an outbreak in your area, या आपके आसपास आपको कहीं पे भी लग रहा है किसी बच्चे को फीवर आया है with rash, first thing is go to your pediatrician. If you don't have a pediatrician nearby, go to a primary health care center. They will immunize your kid if the child is in the age group. अगर वो बच्चा 6 months या 9 months से ऊपर है and 15 months के आसपास है, they'll definitely give you the vaccine. In fact, government की schemes भी है around this, which can be availed at any of the government settings. First thing. Second thing is the prevention part of it. कि अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास किसी बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है, तो कीप योर Mm-hmm. बेबी अवे. Okay. Do not let your child go around if your child is unvaccinated. First and foremost answer is vaccinate the child. If not, then you can go away. You like take your child away from the infected patient and report that patient to the authorities so that they can accordingly act on that. राइट, सो डॉक्टर दैट और एक वन मोर मदर इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि Yeah. जब हम मीजल्स में फीवर आता है तो हम लोग बहुत सारे कपड़े, वी कीप द बेबी वार्म एंड वी ट्राई एंड गिव द मेडिसिन. सो इज दिस द करेक्ट वे टू डील विथ मीजल्स? और विंटर्स भी है, तो इस मामले में हम लोग ये डिजीज को कैसे हैंडल करें?
सो द थिंग इज, जैसे आपको समझ रहे हैं कि मीजल्स है या फीवर आ रहा है आपके बेबी को, तो टेपिड स्पॉन्ज करना, विच इज लाइक बेसिकली जो हम बोलते हैं कि ठंडे पानी के पोंछे मारने हैं शरीर पे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी बॉडी को तो आपको वॉश करना ही है, साथ में स्पेशली जो अंडर आर्म्स है आपके या प्राइवेट एरियाज है जहाँ पे गर्मी ज्यादा रहती है बॉडी की, आप साफ करोगे तो फीवर वहां से थोड़ा जल्दी निकलता है। एंड उसके साथ में आपको क्रोसिन देनी है, या जो भी आप फीवर के लिए दवाई दे रहे हैं वो दे के आपको टेम्परेचर नीचे लेके आना है। एंड ओके। टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर करना है। हैंड टच इज नॉट द वे यू कैन मेजर टेम्परेचर। ये बहुत ओके। इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया में हमारे फॉलो होता है कि बच्चा हमें हाथ लगा के गर्म लग रहा था, पर वो बराबर है। सही नहीं, मेथड वो सही नहीं। ओके। और जब हम लोग बच्चे की देखभाल करते हैं तो बच्चा जनरली कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, और माँ एक होती है जो वरिड हो जाती है, अरे मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है। तो व्हाट आर द फूड्स दैट वी कैन गिव फॉर अ पर्सन और फॉर अ किड हु इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स? कैन यू हेल्प आवर ऑडियंस आउट ओवर या या डेफिनेटली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट थिंग इज, कैसा हो जाता है, दिस इज फर्स्ट इज द जनरलाइज थिंग। कोई भी हियर? यस। इन्फेक्शन होता है या कोई भी बीमारी होती है, पेरेंट्स एक्सपेक्ट कि हमारा बच्चा सब कुछ खाए। बट यस। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, यू शुड आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, व्हेन यू आर इल, आप खुद कितना खाते हो? एक पानी का ग्लास पीने का मन नहीं करता है। So the same thing applies to the kid. The kid will eat less. So within that, like, time you have, or within the frame of eating you have to give the most nutritious things. अब measles in specific में क्या होता है? Two things. Vitamin A deficiency can also cause measles, and measles के कारण vitamin A deficiency भी होती है. So whenever ओके। you go for an injection, साथ में they give you a dose of vitamin A as well. This is more prevalent जहाँ पे बच्चों का वेट कम हो, and I mean actually वेट कम हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि पेरेंट्स को वेट कम लग रहा है, वैसा वाला वेट नहीं, जो हमारे ओके। पैरामीटर्स हैं उसमें वेट कम है, तो विटामिन ए इज ऑलवेज गिवन टू एवरी चाइल्ड हु गोस टू गवर्नमेंट सेटअप। नाउ सेकंड ओके। इसमें ये आ जाता है कि you can give foods which are rich in vitamin A. Examples, carrot ho gaye. You can give carrot because they are highly rich in carotenoids. Second, broccoli, spinach. You can give tomatoes, lemons. These are very good sources for vegetarian people. For the non-veggies, you can give liver, you can give cod liver oil. These things also replenish your vitamin A stores in the body. So ये चीजें ओके। बहुत essential हो जाती है, स्पेशली मीजल्स के टाइम पे। राइट। और इसके साथ साथ नॉर्मल खाना जो दाल चावल वो जो तो आपको होता है वो कंटिन्यू करना चाहिए कंटिन्यू ऑब्वियसली, करना वो ही है। जितना ले सकते हैं वो लेंगे बच्चे। बट कोई भी ऑयली चीजें हैं वो अवॉइड करनी है कम्प्लीटली। नो स्पाइसी फूड्स ड्यूरिंग दीज 15 to 20 days। रादर मैं बोलूंगा कि 1 1.5 महीने तक भी आप कुछ मत दीजिए स्पाइसी, क्योंकि वो डाइजेशन इतना पिकअप हुआ नहीं होता है तब। ओके, दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट आपने बताया कि बी मतलब तीखा खाना नहीं खाना है, ज़्यादा बच्चे को फोर्स नहीं करना है और ग्रेजुअली बच्चे का एपेटाइट को या बढ़ाना है। बिकॉज तो पेरेंट्स का एक और ये होता है, दे गिव चिप्स और दे गिव वेफर्स एंड दे एक्सपेक्ट कि हाँ ये राइट। बच्चा खा लेगा, न्यूट्रिशन मिल जाएगा। बट इन अ बीमारी वाला सिचुएशन यू नीड मोर न्यूट्रिएंट्स एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल टाइम्स, जो ये सब चीजों में नहीं है। राइट। सो जब बच्चा बीमार होता है तो डेफिनेटली स्कूल तो मिस होगा ही, मतलब जो प्री प्राइमरी में है या या प्राइमरी में है उनका स्कूल तो मिस होगा ही। हम लोग स्कूल अथॉरिटीज को हम लोग लेटर लिखते हैं, द चाइल्ड इज फॉलन सिक एंड मेडिकल सर्टिफिकेट इज ऑल फाइन। बट ऐसा भी हो सकता है अदर पेरेंट्स माइट टेक ऑब्जेक्शन कि इसको ये अभी रिकवर हुआ है। सो इज इट अ वे, how do we या tell the या other parents that my child has recovered and I am ready to send my child to the school? ये कैसे हम लोग तो बात ये या कम्युनिकेट करें? सो हियर योर पीडियाट्रिशियन और योर ट्रीटिंग डॉक्टर कम्स इनटू पिक्चर। कैसा हो जाता है मीजल्स में, इफ द टाइम 4 days बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द रैश, जैसे रैश आया उसके 4 दिन पहले तक एंड 6 दिन बाद तक इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है, विच मीन्स कि अगर वो बच्चा इन्फेक्टेड है वो सबको दे सकता है आसपास वालों को। 6 days आफ्टर द रैश हैज गॉन, द चाइल्ड विल बी एब्सोल्युटली फाइन एंड ही वोंट ट्रांसमिट मीजल्स। So ओके। that way, your child is not a transmitter of measles, but considering वो ये बीमारी से निकला है, the child will require rest. So it's better to rest the child for 10 to 15 days, like 10 to 14 days to 12 days at home. And उसके बाद once you feel your child is in a good state, take your child to the, like, send your child to the school. Right. And this is the proper way to prevent the child, other children from having measles. Am I Yeah, correct on that is this very line? important actually. Yeah, exactly. Because it is, as I told you, 9 out of 10 kids will be infected if you send the child home. And there are other variants of measles. Jahan pe it will be of a milder variety, or it can be of a very severe variety. This, whatever I was telling you, is like just a basic measles, जहाँ पे आपको fever होगा, cough cold होगा, क्योंकि that is the mode of entry.
एंड अलॉन्ग विद दैट आपको रैश हो गया बॉडी पे विच इज लाइक नॉर्मल, बट यू कैन डेवलप एनी ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। आपको निमोनिया हो सकता है, आपको brain infection. These are all rare things, but pneumonia is a common one. But brain infections, you can give them severe diarrhea or any other skin infections. So इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस टाइम पे you have to hospitalize your child. Right. Doctor, out of curiosity, I'm going to take just one last question to you. Yeah, no worries. मीजल्स का जो रैशेस होते हैं वो बहुत खुजलीजनक होता है, मैंने सुना है, एंड द किड्स कीप स्क्रैचिंग देयर No, फुल बॉडी। उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? आई no, मीन no, this is दे आर agreed. किड्स But एंड देयर contrary to मम। the public belief, no, measles rashes are not that itchy. ओके, Chickenpox rashes are very itchy. Measles rashes are relatively very less itchy. So आपको कुछ करना नहीं है वो rashes में maximum you can apply your calamine lotion or just your normal coconut oil. But इतने itchy नहीं होते कि they will cause distress to you. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू अ स्मॉल किड जो बात नहीं कर रहा है बट उसको हो गया है, तो इन अ वे टू कम्युनिकेट विद देम कि मम्मा पेन हो रहा है या स्किन ब्लड आ रहा है, उनको नहीं समझ में आता है, तो उन माओ के लिए Agree. आप क्या संदेश देना चाहते हो? उनके यही बोलूंगा कि जो पहली चीज तो क्लोथिंग जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। बेसिक कॉटन क्लोथ्स बिकॉज दे आर रैशेस, दे माइट स्टिक, योर चाइल्ड विल फील वेरी अनकंफर्टेबल। सेकेंड, थोड़ा सा आप जो है कैलामाइन लोशन विच हैज अ सूदनिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, आप वो यूज कर सकते हो। थर्ड थिंग ओवर देयर इज ड्रेसेस जो है चेंज करते रहिए, लाइक ट्वाइस और थ्राइस इफ पॉसिबल इन अ डे, और एटलीस्ट 2 टाइम्स, क्योंकि फीवर आएगा तो इट विल कम डाउन विद स्वेट। स्वेटी होंगे बच्चे, दे विल आल्सो फील वेरी इरिटेटेड एंड ऑल। तो चेंज दैट, दे विल फील बेटर आफ्टर दैट। ये 3-4 चीजों का आपको ध्यान रखना। एंड डोंट ओवर रैप द किड्स विद, मतलब आपने एक कपड़ा पहना दिया उसके ऊपर एक जैकेट, दूसरी जैकेट की ठंड से प्रोटेक्ट करेंगे हम बच्चे को, नहीं। राइट। वो फिर उल्टा इफेक्ट हो जाएगा बच्चों पे। एंड मफलर डाल देंगे, कान में रुई डाल देंगे, तो दैट वोंट हेल्प। ओके, या सो डेफिनेटली योर इनपुट्स वर वेरी वेरी वैल्यूबल, और हमारी समुदाय के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है ये टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे आउटब्रेक इज ऑलरेडी या इट्स हैपनिंग। कमिंग अप। या Yeah, so can you please help us with a conclusion kind of a thing or a takeaway message for this live? या सो फर्स्ट थिंग्स बीइंग फर्स्ट, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए आपको मीजल्स के वैक्सीन देने, मतलब अनसेट है वो, हर पेरेंट को देना ही है। मैं भूल गया, मैं गाँव गया था, मैं यहाँ गया था, वो एक्सेप्टेड नहीं है। एंड दैट इज फॉर योर किड, नॉट फॉर एनीवन एल्स। ओके, फर्स्ट थिंग तो 9 मंथ्स 15 मंथ्स के वैक्सीन तो आपको दिलवाना ही है। इट इज अवेलेबल फ्रीली एट एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यू कंसल्ट अ प्राइवेट पीडियाट्रिशियन, वो दे देते हैं आपको, वो आपको कराना है। सेकेंड थिंग, इफ यू फील आपके बेबी को मीजल्स हुआ है, सो टेक योर चाइल्ड टू द डॉक्टर। डोंट थिंक कि मैं सेल्फ मेडिकेट करूंगा, मैं झाड़ फूटी लगा दूंगा, नीम के पत्ते लगा देंगे, जो पीपल ट्राई एट होम, और फिर जब तबीयत खराब होती है तब आप लेके जाओगे। थर्ड थिंग, डाइट पे ध्यान रखना है आपको, जैसे कि मैंने बोला विटामिन ए रिच चीजें हैं वो आपको देनी है। एंड फाइनली जो है, बेबी के क्लोथिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है एंड बी अफेक्शनेट विद देम। एंड जस्ट वन लास्ट थिंग आई वुड कंक्लूड, आइसोलेट ऑल दी अदर सिबलिंग्स। कैसा हो जाता है, घर में एक बच्चे को हुआ है तो दूसरे बच्चे को Correct, होने के चांसेस बहुत हाई है। तो ये correct. चीज का आपको ध्यान रखना है कि बाकी बच्चे अलग रूम में हो, या ये बच्चे को एक आप अलग रूम में रख दीजिए, उसका खाना पीना जैसे आप कोविड में सब फॉलो कर रहे थे, ये वो जी, आइसोलेशन में, वो सेम जी. थिंग आपको न्यूजीलैंड में भी करनी पड़ेगी। इसमें बस ये है, योर पेरेंट्स आर नॉट विल नॉट गेट इन्फेक्टेड इफ दे आर वैक्सीनेटेड। तो ये नहीं है कि Okay. पेरेंट्स को हो जाएगा, दे कैन गिव इट टू अ थर्ड पर्सन, वो नहीं होगा। जैसे That था कि was अरे my मुझे कोविड हो जाएगा, ये एक right. That पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि ये ना correct. हो जाए, मेरे एक बच्चे से दूसरे बच्चे को हो जाएगा या मुझे हो जाएगा, तो दैट इज नॉट द केस। ये कोविड नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर वैक्सीनेटेड। पेरेंट्स Right. अगर I वैक्सीनेटेड है तो just उनको had नहीं that होगा। question in my mind, and you answered it so beautifully. Ki, when if the parents are vaccinated and if the child is kept isolated, half of the problems are solved. And Dr. एग्जैक्टली। Amrinder, I would like to thank you for taking out your valuable time and discussing the most important topic, hot topic right now amongst या these mothers who have joined our community, and treating each other with respect, as you said, with love during a disease is what we really really want. And your या inputs were really very valuable, so thank you so much for joining us for this live session. And those थैंक्स अ who लॉट want फॉर to हैविंग reach मी। out to Dr. Amrinder, you can follow his Instagram handle and definitely follow him and do ask him questions on the BabyChakra app. He is also available, and download the app so that you can get in touch with Dr. Amrinder and get your queries resolved for free.
Thank you so much for being here, being a part of this live session, Doctor. Thanks a lot for having me. Take care, everyone. Yeah, and be good with your diet, people. Yeah. Thank you so much, Doctor.